हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कारे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, दैट वाई सुपरवाइजर्स आर फेलिंग और नॉट अचीविंग द प्रोडक्शन टारगेट, और व्हाट आर द रीज़न ऑफ देयर फेल्यूर, ऑफ कंसिस्टेंट फेल्यूर इन द मीटिंग ऑफ द प्रोडक्शन टारगेट. So manufacturing में supervisor's role is very important because depending on that the manufacturing plans are prepared and the achievement is depending on the supervisor performance. So हम discuss करेंगे how to cope up with this kind of problem and how much the supervisors are responsible for not achieving the production target and what should be the ideal role of the supervisor if they are in such kind of situation that they are not achieving the production target and there is repeated failure. So what the supervisor should do in these circumstances. So step by step हम discuss करेंगे what are the different reasons that it is converting into the failure of the achieving production target of the manufacturing supervisors. So first one is that your strategic planning, if it is not proper, and resource alignment and resource planning is not proper. So first failure in the strategic planning is that your target of the shift production target of the shift are based on the ideal machine speed, but actually the machine don't run always in the ideal condition. Then the production target वो ऐसा देना चाहिए that it should consider the downtime, then the planned downtime also, machine downtime, and target should be based on the OEE. वही कैलकुलेट करके उस पर से टारगेट फिक्स करना चाहिए. शॉप फ्लोर लॉसेस इग्नोर किया जाता है, दैट यू शुड कंसीडर द शॉप फ्लोर लॉसेस, दैट इज क्वालिटी लॉसेस और एनी मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस दैट वी शुड कंसीडर. रॉ मटेरियल शॉर्टेज एंड डिले इन द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज, इस पर ये भी कंसीडर करना चाहिए. आपका अगर JIT सिस्टम में फेल्यूर रहेगा देन दैट विल लीड टू द रॉ मटेरियल शॉर्टेज एंड डिले इन द रिसोर्सेज. आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए इन केस ऑफ देयर इज ए पावर फेल्यूर ऑन मशीन ब्रेकडाउन. एंड रिएक्टिव रोल के बजाय मैनेजमेंट के पास प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए, दैट दे शुड कंसिडर ऑल दी स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज एंड दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द सुपरवाइजर. सो बाय दैट द सुपरवाइजर फेल्यूर विल रिड्यूस एंड ही विल बी हैविंग द बेटर मोटिवेशन टू मीट द प्रोडक्शन टारगेट. द सेकंड रीजन इज जो ऑपरेटर प्रोवाइड किया जाता है टू द सुपरवाइजर, दे डोंट हैव द प्रॉपर स्किल एंड प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है मशीन्स पर. देन अब्सेंटिज्म एंड एट्रिशन रेट ये बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जब सुपरवाइजर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द ऑपरेटर्स, बेसिक ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता है ऑपरेटर्स को. मैन पावर इश्यूज को पर सुपरवाइजर को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है. एंड ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर का अगर पुअर कम्युनिकेशन एंड मोरल कम रहेगा, इफ देर इज लो मोरल देन दैट विल अफेक्ट देयर मोटिवेशन. द थर्ड रीज़न इज दैट इज आपके अगर इक्विपमेंट का रिलायबिलिटी प्रॉपर नहीं रहेगा और आपका TPM एक्टिविटी प्रॉपर नहीं रहेगा देन योर ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन विल इंक्रीज. पीक प्रोडक्शन में आपका मशीन परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं रहेगा जिसकी वजह से ब्रेकडाउन में वो कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मशीन अवेलेबल अप टाइम प्रॉपर आप मैनेज नहीं कर सकोगे. माइनर इश्यूज जो है शॉप फ्लोर पर वो इग्नोर किए जाते हैं. स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी फॉर द मशीन्स, जो मशीन्स आपको कंटिन्यूसली आप प्लान कर रहे हैं फॉर योर प्रोडक्शन पर्पज, दे आर नॉट प्रॉपरली प्रोवाइडेड विद द स्पेयर पार्ट, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन टाइम एंड मेंटेनेंस टाइम भी बढ़ता है. टूल लाइफ एंड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ये प्रॉपर नहीं मैनेज किया जाता है. और आपका अगर मशीन्स ओल्ड रहेगा एंड दे आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन देन योर आउटपुट स्पीड विल ऑल्सो रिड्यूस एंड ऑपरेटर विल बी हैविंग ट्रबल इन ऑपरेटिंग दोस काइंड ऑफ मशीन्स. फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग द आपका ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट प्रॉपर नहीं रहेगा फॉर द सुपरवाइजर एम्पावरमेंट. आपका अगर डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज रहेगा, सुपरवाइजर की तरफ से कुछ प्रपोजल आते हैं फॉर द डिसीजन, देन इफ देर इज डिले इन द अप्रूवल, जिसकी वजह से आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लान में उसको अफेक्ट हो सकता है, रिसोर्स प्लानिंग में अफेक्ट हो सकता है. सुपरवाइजर को आपने अगर एक्सेसिव पेपर वर्क दिया तो दे विल स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द पेपर वर्क एंड दे विल नॉट एबल टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटी. आपका अगर डैशबोर्ड रियल टाइम रहेगा ना, डेली आप अगर डैशबोर्ड अपडेट नहीं करते रहेंगे देन दैट विल नॉट गिव प्रॉपर फीडबैक टू द मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर.
प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अगर टाइमली नहीं रहेगा एंड इफ द प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एंड मैनेजमेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू solve those problems, then that will adversely affect the manufacturing conditions and supervisor morale on the shop floor. And आप अगर supervisor को responsibilities assign करते हैं but you are not giving them the authority, that if you are not providing them the proper liberty to take the improvement action, then that will also affect the manufacturing targets. सो इन सर्च सर्कमस्टेंसेस आप अगर सुपरवाइज़र हो तो आप अगर ये प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे या आपके मैन्युफैक्चरिंग शॉप में अगर सुपरवाइज़र प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे, देन व्हाट शुड डू द सुपरवाइज़र शुड हैव द प्रॉपर एनालिटिकल एंड डेटा कलेक्शन स्किल. उन्होंने डे टू डे डेटा कलेक्शन करना चाहिए और उसका प्रॉपर एनालिसिस करके उसका रिपोर्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, दैट वेयर आर द लॉसेस एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स and where are the losses in terms of time, किधर ज़्यादा वेस्ट होता है, देन क्वालिटी में क्या इश्यूज है, ये प्रॉपर अगर इन्फॉर्म करेंगे देन इट गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम सॉल्व करके सुपरवाइजर को प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस प्रोवाइड करना चाहिए. सो इन दिस वे द प्रॉब्लम इन द मैन्युफैक्चरिंग कैन बी सॉल्व एंड supervisors will be able to meet the production target regularly. So this is regarding today's video. Then what should be the ambience, and then question arises what should be the atmosphere and condition on the shop floor. तो there should be not be blame game on the shop floor है. आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपका प्रोडक्शन टारगेट आप रेगुलरली आप मिस करते रहेंगे, देन यू शुड नॉट ब्लेम टू द सुपरवाइजर एंड मैनेजमेंट शुड कंसिडर इट एज एन प्रॉब्लम इन ऑल दिस एस्पेक्ट. हमने जो डिस्कस किया है उस पर से मैनेजमेंट में एक्शन लेके सुपरवाइजर को सपोर्ट करना चाहिए, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर इज टू प्रोवाइड द प्रॉपर डेटा एंड एनालिसिस टू द मैनेजमेंट. सो दिस इज द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो. सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू टू ज्वाइन माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.